तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, अब तक कोई चीज समझ में ना आई हो, क्योंकि अब हम लोगों ने अब जो सेशन रखा है वो रखा हुआ है जस्ट प्रैक्टिस के लिए। फिर भी अगर किसी ने लास्ट 3 से 4 वीक हो गए हम लोगों को कंटिन्यू करते हैं, तो किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या वैसे कोई चीज रिपीट करनी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों ने ये प्लान किया है, क्योंकि अब हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोगों ने वैसे ये सोचा है कि हम लोग एक वीक एक चीज को लेकर प्रैक्टिस करें, बनिस्बत ये कि हम हर चीज की प्रैक्टिस करें, 1 घंटे में कवर नहीं होती। तो हम ये करते हैं कि भाई इस वीक पूरा हम लिसनिंग कर लेते हैं, उससे नेक्स्ट वीक में हम लोग रीडिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में राइटिंग करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट वीक में ना मतलब फोर्थ मॉड्यूल स्पीकिंग कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये ठीक है ऐसे करना? या कोई इसी का कोई और आइडिया या प्लान हो कि इससे बेटर कोई और तरीका है कि उस तरह कर लेते हैं, तो फिर उस तरह कर लेते हैं। वैसे तो प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आपकी वीकनेसेस पता चलती हैं और आपकी चीजें जो है वो सही होती हैं। यस मैम, मेरे ख्याल से हमें लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी हाँ को जी। हमें अगर कंटिन्यू किसी का करते कोई हैं। क्वेश्चन नहीं है, किसी ने कुछ पूछना है तो ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आपने क्या करना है, सब अपनी पेपर पेंसिल मतलब पास रखें, या जिस चीज पे भी स्क्रीन पे आप लोगों ने लिखना हो, जिस चीज पे भी आप आंसर जो है वो इसको टाइप करते जाए अपना अपना। तो बाद में फिर हम एंड पे देखेंगे कि भाई कौन किसका आंसर सही आया और किसके कितने गलत आए, या जो भी। फिर भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ चीज रिपीट करनी हो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर ये है कि अब हम लोगों ने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस डेली बेसिस के ऊपर पूरा घंटा। अच्छा, तो फिर इसको 1 बाय 1 करना है, या मैं जस्ट इसको प्ले कर दूं और सब अपने अपने आंसर टाइप करते जाएंगे, तो फिर एट द एंड हम लोग इसका रिजल्ट देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जमीना, मैं इसको प्ले कर रही हूँ, तो फिर आप ना अपने आंसर टाइप करती जाओ, तो फिर हम एंड पे देखेंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं। ओके मैम, श्योर। Instructions. You're going to hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the real test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to section 1. आवाज सही आ रही है सबको? Section 1. आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। ओके। You will hear a conversation about travel. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good afternoon.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जो आपने ऑडियो प्ले की इसकी आवाज नहीं आ रही। You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good afternoon. The Australia Travel Agency. How can I help you? Good afternoon. I'd like to know some information about trips to different resorts. Okay. Can you tell me some of your details first? Of course. What's your occupation? I'm a first-year student. Are you an Australian? No, I'm from New York. So you are American. Yes. What's your full name? My name is Ariel Lee. Tell me your contact number, please. It is 462-83095. And my address? No, we just need your contact number. Okay. Can you introduce me some attractions? Obviously, it varies, but always places of famous main resorts, such as Sydney, Melbourne, or some places like that. Just tour resorts? I mean, does that include other activities? Yes. Besides main resorts, we will arrange for you to enjoy some local refreshments and some special activities. So, how much does it cost? Usually it varies between $20 and $35 per head, depending on the place. And what is the departure date and time? It depends on various tours, but try to keep the departure time fixed. When? 7 o'clock in the morning. And how about the transport? We have a minibus or coach, depending on the number of tourists. May I need a reservation? Yes, you know summer holidays are coming, so I suggest that tourists reserve a seat in advance. Is there a discount for that? I'm sorry, we do not have any discounts during peak season. Now look at questions 5 to 10. मैम इसे आप 5 सेकंड आगे भी मूव करवा सकती हैं। उससे ये होगा कि हमारा इधर से मैम ये जो नीचे है ना राइट में। नहीं, मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपको वो सेकंड देते हैं ना, उनमें आपको ये चाहिए कि ये जो क्वेश्चन नहीं है कि 5 क्वेश्चन पढ़ लें आप, और मेन जो उसके कीवर्ड्स हैं ना उसको अंडरलाइन कर लें कि इन क्वेश्चन में क्या बात हुई है। मैम वो हमारा टाइम ना फिर शॉर्ट हो जाता है, ऐसा देखा था हमने। नहीं, मुझे नहीं लगता शॉर्ट हो, क्योंकि 32 मिनट्स टोटल लगेंगे और हमारे पास तो घंटा पड़ा है अभी भी। मेरे ख्याल से 50 मिनट्स हैं हमारे पास। मैम ये साइड पे 32 मिनट्स 33 सेकंड्स। अच्छा, चलिए आगे करते हैं। We'll have 25 people in a minibus. It is Sydney. And answer questions 5 to 10. Could you tell me some details of the trips? Yes, the first place is Sydney. That's on the 12th of January. We'll have 25 people in a minibus. Fine. Going to which attraction? We will visit one of the most famous theatres in the world. The Sydney Opera House. Right. You can appreciate and watch an opera there. Really? What's the name of the opera? I'm not sure. Let me check the house's arrangements. And then you can visit the National Museum to know about the history and customs of Australia. Great. In the evening, you can enjoy some local snacks if you like. Fine. We're going to the Blue Mountains on the 25th of January. Blue Mountains. Is it
A blue mountain. The mountain got its name for blue fog. It is usually covered by a blue fog. That's so interesting. Yes, it is a popular place for young men because they are so cool, and you can enjoy lots of sports there, such as rock climbing, bushwalking, and bird watching. How many people will go there together? You will take a coach that has about 30 seats. Fine. And the next place is Melbourne on the 10th of February, with about 20 people in a minibus. What's the resort? You could appreciate the famous Melbourne Church, and maybe you might have a chance to attend a local exhibition, if they hold it as usual. Fine. Do you have some tours to the beach? Yes, one of the most famous coral reefs in the world is the Great Barrier Reef, and we have arranged that on the 23rd of February. I'm looking forward to यार इसकी क्या डेट बताई थी? मैम इसकी 10th फरवरी बताई है. visiting there. Yes, many people like there. There are some interesting water sports, such as diving, swimming in the water, or just taking a photo of coral. Great. I guess there will be many people. Yes, but our coach is only for 30 people altogether. That's so great. Can you book a seat for me now? Yes, and I will confirm your reference number later by telephone, okay? Right. Thank you very much. You're welcome. I hope you enjoy the trip. This is the end of section 1. You now have half a minute to check. You will hear a conversation in a bank. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good morning. I'd like to open a bank account, please. Good morning. What kind of account do you want to open? I'm not sure. Perhaps you can give me some suggestions. I only want to deposit money in the bank and pay all kinds of bills easily. Fine. I've got the application form here. First of all, can I have your full name, please? Richard Lee. Fine, Richard. What's your occupation? I'm studying a doctor's degree now, although I was a dentist before coming here. Well, so you are a student. What kind of account can you suggest for me? How about a deposit account? What's the difference between that and a current account? There are many differences, such as the interest rate, overdraft and service, and so on. Fine, I will take your recommendation. Okay, let's talk about the main Next, two sorry. account cards of Next. the deposit account. हाँ जी. नेक्स्ट पे जाए मैम. 13 को उन्होंने ए आंसर बता दिए. Fine. One card is called the Solo card, and the other one is named MasterCard. Which one is better for me? Let me introduce you to some differences of the two cards. Okay. The first one is annual interest rate. Which one is higher? Of course, it is the MasterCard. At present, its rate is 5.5%, but the Solo card is only 2.5%. Now look at questions 16 to 20. Now listen carefully
and answer questions 16 to 20. How about the other differences? The service supplied with the two cards. Could you speak specifically? We usually supply internet service and mobile service with all of the cards, of course, including the solo card. Yes, I'd like to ask for the service of mobile and does Solo Card have an overdraft? I'm sorry, but MasterCard has such a service. Fine. If you want to take more money out of the bank than you have in it, be very careful. You should not do this without the bank's permission, and you will have to pay some charge. Do you mean interest? No, I mean the overdraft charge. How much is that charge? According to the bank's rules, the minimum fee is about 2%. Fine. The last item of the two cards is the requirement. There is no limitation of the solo card, but if you want to get MasterCard, you should deposit a minimum sum of £1,500. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, वॉइस आ रही है। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं आज आप लोग? क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर हम लिसनिंग का मॉक टेस्ट कर रहे थे। वो स्क्रीन में इशत नहीं विजिबल की हुई थी। सही, तो मेरा ख्याल है शायद कोई इंटरनेट का इशू होगा जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो गई है, मेरा ख्याल है। जी सर, ऐसे ही। हाँ, तो कोई मसला नहीं, आप में से कोई जो स्क्रीन शेयर कर लें। आप मैम जमीना आप शेयर कर लें। सर मैंने लैपटॉप से नहीं ज्वाइन किया क्योंकि लाइट इशू था, तो फिर सिग्नल चले जाते हैं अचानक। ठीक है, हमारे साथ और पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे साथ आयशा हैं, अजमल हैं, सबा हैं। कोई भी जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। आई थिंक मैम ने ज्वाइन कर लिया।
and the first time. Oh, what's the requirement of money? What do you mean? I mean, I cannot deposit cash when I open a bank account. Don't worry, we accept cash and cheque or even money order. Great. So which card did you decide to open? I'd like to open the MasterCard. A good choice. How often would you like to receive your statement? Monthly, please. Okay, the last one you should know is the opening time. Banks usually open from 9 a.m. until 4:30 p.m. from Monday to Friday, but most branches open until 3:30 p.m. on Saturdays. Okay, I see. Thank you very much. You're welcome. This is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 3. Section 3. We will hear a conversation between a student and her tutor about the assignment. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Good morning. Oh, it's just hit 12. Good morning, Miss Potter. May I come in? Oh, Jerry, of course. Come in and take a seat, please. Thank you. Well, how about your assignment? Do you mean my paper? Yes. I still think about the draft, but I hope you can give me some help and suggestions. Of course. How long will it take? I'm not sure. Maybe 3 days? My advice is that you should spend a lot of time on your draft. As you know, paper. A good draft can help you outline your paper and even benefit your argument. Okay, I will try my best to write up my work. Miss Potter. Generally speaking, there are 4 parts and references. So there are 5 parts. Right. Contents, introduction, main body. And conclusion? Yes, and a bibliography. So how about the word limitation of my paper? According to the requirements, you have to write at least 3,000 words and not over 5,000. Okay, 3 to 5,000. Right. How about your research? I haven't begun to do the research. Why? Because I'm not sure about the research method. I mean, I cannot decide to use which one now. I remember I suggested you to use the method of interview. Yes, but I think maybe questionnaire is better for my work. Really? Tell me your reason. I have to spend some time of the day on a part-time job, so I think maybe a questionnaire is a good way to collect the data that I need. Fine. Oh, do you search resources or data from the internet? Yes, I think it's a good way to collect data, and as you know, it can help save lots of time. Jerry, in fact, many students do most of their research on the internet. One might think that it is an easier way to get resources, but most data are from highly unreliable resources, so be critical.
Okay, I will pay attention to that. Now look at questions 25 to 30. Now listen carefully to 30. Then there are some things you should consider when you write the paper. Okay. Be careful with your references and quotations, and do not share other people's work. I mean, you should write clearly about reference books and do not forget to acknowledge the original writers. Otherwise, you will be failed for plagiarism. Okay, I've got it. The other point is... Deadline? No, deadline is the date of handing in your work. You better hand it in on time. But if you have a reasonable excuse, मैम आपकी you can जो ask for an ऑडियो आ रही है बहुत बार-बार कट हो रही है. extension. Fine. Sorry to interrupt you. That's okay. The other point you should pay attention to is your research data. Okay, I will recommend to me some good reference books about the topic of my paper. Fine. Let's check the reference book list. अब आ रही आवाज? असल में यहाँ पे ना बारिश हो रही है, इंटरनेट का इशू है. मैं अगर अब कोई इशू हुआ तो आप लोग अपने तरफ से उसको प्ले कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार ना डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट. तो अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, ma'am, clear. Others. The book called The Economics Tendency is a good one for your paper. Really? And the writer and the publisher?
The writer is Hilary Justice, and the publisher is Oxford University Press. Can I borrow it from the library? Of course. Great. Really? Oh, Miss Potter, could you recommend to me some good reference books about the topic of my paper? Fine. Let's check the reference book list. The first one is Drake Wister's book, Right, what's the title? Global Economy. Is it the one published by the Cambridge University Press? Right. And I think Victoria Smith's book is a good choice. What's that title? A Strategy of Marketing, And which publisher? London Press. Fine, and how about others? The book called The Economics Tendency is a good one for your paper. Really? And the writer and the publisher? The writer is Hilary Justice, and the publisher is Oxford University Press. Can I borrow it from the library? Of course. Great. And the last one that is helpful to your work is the book of William Hanna. How do you spell the surname? Hanna. Okay, and the title of this book? Business Management, published by Cambridge University Press. Okay. But you cannot borrow the book from the library Why? because it belongs to the closed reserve. You have to read it in the library. Okay, thank you very much. You're welcome. This is the end of section 3. I'll now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. Section 4. We will hear a conversation about a credit card fraud. First, you have some time to look at the questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hello. In today's programme, we have invited Ken Farrow, Head of Financial Crime at Lloyds TSB, to introduce some information about credit card fraud. Welcome, Farrow. Thanks, Catherine. Has a chip and PIN given new chances for thieves to steal the details of our credit cards? Maybe. In the past, there has been typically 50,000 or 60,000 ATMs in the UK where people's PIN could be collected. And now there's hundreds of thousands of points of sales terminals. It's a fraud where criminals capture details and then make a magnetic stripe card copy. How easy is it to do this? One way is to modify a terminal. So that's what's happening often in the past with cash machines. The same can be done for chip and PIN terminals. The other way is to replace it with an entire counterfeit. There have been incidences in America and in Europe with entire fake ATMs being set up. The last way is to set up a concealed camera and have somebody using sleight of hand to being set up. How easy is it given new chances for thieves to steal the details of our credit cards? Maybe. In the past, there has been typically 50,000 or 60,000 ATMs in the UK where people's PIN could be collected. And now there's hundreds of thousands of points of sales terminals. It's a fraud where criminals capture details and then make a magnetic stripe card copy. How easy is it to do this? One way is to modify a terminal. So that's what's happening often in the past with cash machines. The same can be done for chip and PIN terminals. The other way is to replace it with an entire counterfeit. There have been incidences in America and in Europe with entire fake ATMs being set up. The last way is to set up a concealed camera and have somebody using sleight of hand to swipe your card through another machine so that you don't even need to modify the main machine. If someone decided to set up a little device to modify one of these handheld PIN pads,
How easy would that be to do? Usually it wouldn't be technically too hard. You just need about £100 to prepare for some equipment and raw parts. But it would take some engineering time and effort. The terminals themselves have a function of tamper resistance. If you try to open the casing, the machines will shut down and make them inoperative. But there's only so much that you just need about £100 to prepare for some equipment and raw parts. But it would take some engineering time and effort. The terminals themselves have a function of tamper resistance. If you try to open the casing, the machines will shut down and make them inoperative. Persistent attacker compared with an ATM. Well, once the card is copied and the PIN is obtained, crooks can make a fake card and use the PIN to withdraw money. Do all cash machines accept these cards in the UK? Cash machines in the UK may not accept these cards, but many machines abroad will. Why? It depends on our radar. We can obviously know what they are doing while criminals can't break the chip at the moment. So what they're doing is to use the old method to skim the magnetic strips on the cards. However, they've realized that they cannot succeed in the UK. So they go on to the continent and to other countries in the Far East and use them where ATMs are not secured for chip use. Right. So they can take the old style card and use it abroad and get the cash out more easily. That's right. There is a magnetic strip attached to the card for customers who are traveling. So what are you doing about this increase of use in foreign cash machines of cards that have been stolen here? What we're doing is to gradually extend our security blanket. That means we will monitor the card usage, whether it's in the UK or abroad. If we feel there's something wrong, we will contact and confirm with the customer. We're up against organized crime. And organized crime is trying to get one step ahead of us, and we're trying to keep one step ahead of them. Yes. How does security work in UK machines? Because sometimes fake cards will work there as well, won't they? When a bank is looking at its arrangements, it has to balance up convenience to customers with security. Yes. So what are you doing to make things more secure? I think the chip and the PIN situation has really improved. And if you look at the figures, in fact, hard fraud has dropped by 24% over the last period. I think you can say this program has done well. Yes, I can see the figures, but there has been a huge amount of coverage in the press this week. Some banks have stopped using PINs. Doesn't that decrease the public's trust in this new system? And some people even think the new system is designed for new fraud. I don't think so. I'm not going to comment on particular cases. What I would say is that usually the evidence of crime has always been with the old technology, not with the new. So new technology seems to be working well. That's right. Okay, thanks for your professional introduction. See you next time. See you. This is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers.
अच्छा, ये 11, 12 और 13 के क्या आंसर्स हैं आप लोगों के ने क्या लगाए हैं इसके? अभी यहाँ पे तो करेक्ट कर लेंगे, वैसे लगाए क्या थे? आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चार्ज 2%। अच्छा, रिक्वायर्ड old technology 25% secure balance traveling के स्पेलिंग में तो ये भी ठीक था। अच्छा, रिडार, अच्छा parts, कैमरा, अच्छा कंसील्ड कैमरा, मैम ये लिसनिंग में स्कोर बेसिकली वो स्पीकर्स पे बहुत डिपेंड करता है। नहीं, आप ये देखें कि इसमें कोई गलत नहीं है ना। हम असल में वो टाइपिंग में ना एक तो लाइट बार बार इशू करिए। ये देखें यहाँ पे ये बात जो है ना, ये लोकल रिफ्रेशमेंट की बात की हुई है, सिर्फ रिफ्रेशमेंट में स्पेलिंग गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। ओपरा हाउस, उसने सिडनी ओपरा हाउस की बात की थी, ये गलत है। अच्छा, ओल माउंटेन ये हमारा ठीक है। उसके अलावा एक ये मेरे ख्याल से मैंने लिखा नहीं था, 10 फरवरी में ना, ये फरवरी की स्पेलिंग की गलत है, वरना ये तो आंसर भी ठीक था। ये तो सारे ही गलत आए हैं मेरे ख्याल से। इसके अलावा जो वन वर्ड वाले थे ना, अब ये देखें कि यहाँ पे उसने मास्टर कार्ड की बात की थी 2.5%, इंटरनेट की बात की थी, लेकिन उसने कहा था इंटरनेट सर्विस, तो उसमें वन वर्ड टू वर्ड, क्योंकि 3 वर्ड तक लिमिट लिखी थी तो मैंने इंटरनेट लिखा, तो आगे सर्विस लिखना था। अच्छा, उसने बोला सम चार्ज, तो जो चार्ज करना था ना वो उसने 2% बोला था कि मिनिमम 2% होना चाहिए, लेकिन वहां पे मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा होगा कि वो चार्ज करेंगे इस कार्ड के लिए या नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स थी, ये मैंने लिखा नहीं था, ये 50% था। और यहाँ पे जो उसने 3:30 की बात की थी ना, तो उसने कहा था ओपन रहेगा सैटरडे को 9 AM से 3:30 PM तक। ठीक है, ये फिर हमारे ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओल्ड इकोनॉमिक्स ठीक है, ये ठीक है, लंदन प्रेस ठीक है, विलियम बिजनेस मैनेजमेंट पिन ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मॉडिफाई आ टर्मिनल, मॉडिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन उसने क्योंकि पूरा लफ्ज बोला था और वहां पे उसने 3 वर्ड्स बोले हुए थे, तो मॉडिफाई आ टर्मिनल, दैट मीन कि मतलब सुनना में ठीक था लेकिन कहीं पे कोई वर्ड की मिस्टेक हो रही है। अच्छा, फिर उसने कैमरे की बात की थी, उसने कंसील्ड कैमरे की बात की हुई थी, इसके लिए ये गलत है, वरना वर्ड ये भी ठीक था। फिर रॉ आना था, रॉ लिखा हुआ है पार्ट्स, और ये गलत था, ये मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या था। ओल्ड मेथड, ये रिडार उसने यूज किया था। ट्रेवलिंग के में स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, और बैलेंस ये पता नहीं, और 25% भी ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी भी ठीक है। यहाँ पे उसने रिडार की बात की थी, ये मुझे याद है, और इस बात का तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है। तो आप लोगों के कितने ठीक आए हैं? इसमें जो मोस्टली है ना वो आंसर करेक्ट हैं, उनमें मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और कोई मिस्टेक नहीं है। और 3-4 जो मैंने लिखे ही नहीं है। यस मैम, इसको क्लास को मैंने थोड़ा वैसे लेट ना ज्वाइन किया एंड तो मैंने 35 से आगे देखे थे, लेकिन आज मैंने इसमें 2 टेस्ट दिए थे इसमें लिखने में ना, लेकिन दोनों में मुझे स्पीकर वॉइस थोड़ा सा अजीब से लग रहा था, तो मुझे 5.5 से ऊपर नहीं आया। वैसे कभी मेरा इसमें 7 जाते, कभी मेरा 5 और नहीं, 5.5 तो में आप जाते। 5.5 में ये देखें ना, मिस्टेक क्या कर रहे हैं। अगर आपको आंसर मिल रहा है, आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है ना। मैं असल में टाइप हाँ बिल्कुल, नहीं करती ना, लिखती हूँ, तो तीन चार मेरी इस तो तरह के इसलिए मिस्टेक्स मिस्टेक होती आ है मेरे। गई हैं। मैं बिल्कुल वो पेपर अटेम्प्ट बुक से करती हूँ actually। बिल्कुल, 3-4 तो मेरे हाँ इस तरह जी, मिस्टेक होते हैं बिल्कुल, वो जिसमें ना, जरमीना जिस तरह अभी आपके कितने आपने ठीक? रिफ्रेशमेंट में किए ना।
हाँ जी हाँ जी, तो वो देखिए ना वर्ड सारे ही ठीक हैं, एंड पे क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पीड में बोलते हैं तो एंड पे ये रिडार मैंने सुना था, लेकिन फिर ना मेरे से गलती होगी। अच्छा, लेकिन तो आप दूसरा ये इसमें वाला वर्ड तो मैम, मैंने खैर सुना ही नहीं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इससे मैम आप ऑडियो को हाँ ब्रेक जी, कर रहे थे ना साथ साथ कुछ जगहों पे। नहीं मैं ब्रेक नहीं कर रही थी, असल में यहाँ पे नहीं, ब्रेक बारिश हो ब्रेक रही है, इंटरनेट का बहुत इश्यू चल रहा है, तो मैं, ब्रेक नहीं कर रहे थे आप ऑडियोज को, वो हम मेरी अपने आवाज अब, टाइम के अंदर कर सकते हैं। हाँ हमारा, आप अपने टाइम के अंदर कर सकते हैं ना, आप जब फ्री हो तो आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना खुद ही। नहीं मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ जानबूझ के अभी। उसको अभी रिपीट हम, करी थी वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा मुझे मैं आपकी कह बात रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ यस रही। मैम मैं कह रहा हूँ बेसिकली हमारा ये जो आइडिया, हमारा जो जितने हमें टाइम दिया होता है ना, उसमें हम क्या है, उसको जो चीज समझ नहीं है उसको थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, हालांकि नहीं कर सकते ना। नहीं देखें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, और एक ही पोर्शन की बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट पोर्शन में, सेकंड में, थर्ड में, क्योंकि एंड वाला ज्यादा स्पीड से बोला जाता है तो जिसको मैं वर्ड समझ में नहीं आते कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आप इसको बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करें ना, कुछ नहीं होता इससे, तो कुछ नहीं होता। ओके मैम। आप इसको जब प्रैक्टिस करते टाइम आप बार बार इसको ना अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें, इसमें क्या है। जर्मीना आपके कितने ठीक हैं? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल आ ही नहीं रही है, और मुझे लग रहा है आपकी तरफ से इशू है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना अभी, जिन्होंने बोला है, उनकी आवाज मुझे सही आ रही थी। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से ना इशू है, आप ऐसा करें मैसेज टाइप कर दें, मतलब लिख के सेंड कर दें क्या बोल रही हैं आप। अच्छा, तो बाकी आप लोगों की स्पीकिंग का क्या हालात हैं, रीडिंग के और राइटिंग के? स्पीकिंग कल में मैंने एक इंटरनेशनल वो ग्रुप एक ज्वाइन किया हुआ है, एक इंटरनेशनल जो है एक टीम है, वो पढ़ा, वो कर रहे हैं स्पीकिंग में। बाकी हम्म। अ, इस क्लास में थोड़ा सा पिछले वीक हुआ था, उससे पिछले वीक जब आप क्लास में रहे थे। बाकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, हाँ, तो लेकिन उस मेन टाइम तो फोकस। हमने रीडिंग की थी ना सिर्फ, यस मैम, हाँ। नहीं, उससे पिछले जब तो उसमें आपने तो वो हम कर रहे लोगों थे ने ना, रीडिंग की थी। हम्म। हम थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए, मतलब उसके किए थे ना स्पीकिंग के, इससे ज़्यादा तो खैर नहीं किए थे। हाँ, बाकी उस क्लास में ज़्यादातर ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए है ना, उस वजह से उसमें काफ़ी प्रैक्टिस हो रहे हैं। बाकी मेन फोकस में इन दोनों पे रखे हुए हैं, हम्म। लेकिन इसमें स्कोर कभी बढ़ जाते हैं, कभी फिर नीचे आ जाते हैं, अच्छा, समझ ये नहीं आता। किसी ने हैंड, जी मिस ये मतीन कौन बात है? कर। मतीन, हाँ जी बोले आप। अच्छा, ये स्पीकिंग की हाँ बात जी। करते हैं, उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म एक यूज कर रहा हूँ, एक हालो ऐप है। उस पे आप जब भी चाहें कनेक्ट होके स्पीकिंग कर सकते हैं। तो उस पे स्पीकिंग कर रहा हूँ। किसके साथ? हेलो। हालो, डिफरेंट पीपल हैं वर्ल्ड के, उसमें कनेक्ट है। नहीं, आप स्पीकिंग किसके साथ कर सकती हैं? हेलो कैसे लिखना है उसको बताएं, स्पेलिंग क्या है? मैं इधर चैट में सेट कर रहा हूँ। मैं सर्च कर रही हूँ, आप मुझे बता दें। जी जी। अच्छा, तो हेलो, ठीक है। इस पे अकाउंट बना के आपने सिर्फ उस पे यानी कि अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी होती है। तो उस वक्त जो भी अवेलेबल होगा उसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे और बात करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो तो आपने एक, ठीक है ठीक है, मैंने इस तरह की एक दो ऐप डाउनलोड की थी, तो जिनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं वो लोग कौन है और वो कैसी स्पीकिंग करती हैं? मैंने एक दफा आपको बताया भी था पहले, हमारे ना जब स्टार्ट हुआ था ना ये, तो यहाँ पे ना एक बंदे ने सेंड की थी, एक ऐप ही सेंड की थी,
तो मैंने खैर वो डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद मैंने स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस की। तो वो ऐसे ही होगा ना, कॉल आती है, कॉल आने वाला सीन, जितने भी लोग वहां पे अवेलेबल हैं, तो मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी और मैं बात कर रही थी। तो जो लोग थे ना वो सारे इंडिया के थे, और उनकी खुद की ना अपनी स्पीकिंग इतनी नहीं अच्छी। हाँ, अगर किसी का लेवल है और किसी का लेवल अच्छा है तो आप ना हमेशा उस बंदे के साथ स्पीकिंग करें जिसकी स्पीकिंग और जिसका लेवल ऑलरेडी अच्छा हो, जो आपको आइडियाज दे सके। डाउनलोड की थी ना मैं, तो खैर एक्सपीरियंस ले रही थी, मैं यूज नहीं करती। लेकिन मुझे कॉल्स आई, मेरे ख्याल से इंडिया के थे कोई चार पांच से भी ज्यादा लोग थे। तो उनकी अपनी भी नॉर्मल थी, मैं देखे ना, अब उतनी नॉर्मल तो हमारी अपनी भी है। तो हमने नॉर्मल तो नहीं ना करनी, हमने तो इम्प्रूव करनी है। अब आपने जिनके साथ में प्रैक्टिस की हो वो कौन लोग हैं, वो कैसे बोलते हैं, और आपकी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है होगी या नहीं है, ये अब आपने देखना है। यस मैम, ठीक है। और इससे ज्यादा एक और भी अच्छा तरीका है कि आपने जो टॉपिक सर्च कर रहे हैं ना, या जिस पे आपको बोलने की समझ नहीं आ रही, आप ये करें कि इंटरनेट पे वो लिख के ना, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, आप उसको पढ़ें। उसको पढ़ने का फायदा पता है क्या होगा? उसको पढ़ने का फायदा ये होगा कि वो आपको राइटिंग में भी हेल्प करेगा। जब आप उसको रीड करेंगे ना, आपको समझ आएगी कि ग्रामर किस तरह से ठीक रख सकते हैं, आप कर सकते हैं। और सेकंड चीज ये कि आपको डिफरेंट चीजों के आंसर करने के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, तो फिर उन आइडियाज को आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में भी, और सेम वही आइडियाज आप लोग यूज कर सकते हैं राइटिंग में भी। तो आप ये भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, बोलने की भी किसी के साथ, अगर किसी का अच्छा लेवल है वो भी नहीं, तो अगर आपको ऐप सूटेबल लगती है तो आप ऐप से भी करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको चीजें पढ़नी भी चाहिए, पढ़ने से चीजें ज्यादा ठीक होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, उनको जैसे भी लगता हो। पढ़ने से आपकी सारी चीजें ठीक होंगी, आपकी रीडिंग भी ठीक होगी। जब आप पढ़ोगे आपको आइडियाज भी मिलेंगे। अगर आप देखें, आप अगर गूगल पे भी नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। ये जो ऑलरेडी कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक्स है ना, इनके एंड के ऊपर उन लोगों ने लिसनिंग फ्रेज की हुई होती है, और किस तरह से स्पीकर जो है वो इन डिटेल इन डेप्थ में पूरी कन्वर्सेशन करता है। एक चीज ये, दूसरी ये कि ऐसे के जितने भी अच्छे बैंड्स उन्होंने दिए होते हैं ना, डिस्क्राइब किए होते हैं, एग्जामिनर ने उनको देखा हुआ होता है, और उनके ऊपर उन्होंने कमेंट्स किए हुए होते हैं कि भाई हमने अगर इसको 5.5 बैंड दिए हैं तो उसमें इसने क्या क्या चीजें यूज की और क्या क्या चीजें यूज नहीं की, मतलब क्या चीजें इसकी अच्छी थी और क्या चीजें, किन चीजों में इनकी लिमिटेशन थी जिस वजह से हमने इसको अच्छे बैंड नहीं दिए। इसी तरह से राइटिंग टास्क 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो आप वहां से ना जो अच्छे जिनको बैंड मिले हुए हैं ना, लाइक 7, 8, 9, 7 और 6 तक, अबव 6 जितने भी बैंड मिले हुए हैं ना, आप वहां से पढ़ें। वहां से पढ़ के आपको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि किस तरह से जब आपके सामने राइटिंग टास्क 1 आए और 2 आए, आप उसको राइट कर सकते हैं। और स्पीकिंग के लिए ये है कि आपको वो पढ़ने से स्पीकिंग के लिए भी आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, मैम फिर बेसिकली आप मेन किसी के इशू साथ ना उसको राइटिंग में प्रैक्टिस करें। इवैल्यूएशन का इशू होता है ना। राइटिंग तो चलो हम उस बुक को देख के डेली करते जाएंगे, लेकिन इवैल्यूएशन कैसे करें? क्योंकि मुझे एक वेबसाइट मिला था IELTS 69, उसने मेरे एक ही उस पे हम्म। इवैल्यूएशन किया, इसके बाद इवैल्यूएशन नहीं हो रहा, इसके बाद वो प्रीमियम मांग रहे हम्म। थे ना। तो ऐसा कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपना राइटिंग को आप इवैल्यूएट कर सकें? राइटिंग की बात कर रहे हैं? जी जी। या अगर इधर इस तरह प्लेटफॉर्म हो ना कि मैं आपको सेंड करूं, आप मेरा उस पर चेक कर ले, सही नहीं राइटिंग को इसी तरह करके हाँ, अगर ठीक ठीक है, मेरे को इम्प्रूव। आप मुझे सेंड कर दें, आप मुझे सेंड कर दें, मैं आप आपको मुझे इधर सेंड कर दें, मैं खुद भी इसी पढ़ती स्लैक में रहती सेंड हूँ कर सकता चीजें। हूँ या हाँ, किस आप तरह? मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं खुद पढ़ती रहती ठीक, ठीक हो गया मैम। और मैंने मिस, एक और सजेशन ही थी कि क्या अगर हम ये जो रोजाना मीटिंग करते हैं इसके लास्ट 10 मिनट को स्पीकिंग के लिए रिजर्व कर दें, यानी कि स्टिक अलॉट कर दें, तो ये आपकी राय क्या है इस पे? स्पीकिंग के लिए बेस्ट तरीका यही है, जिस तरह लास्ट टाइम सर ने भी डिस्कस किया था, हमें थ्रू आउट क्लास अगर हम कोशिश करें ना इंग्लिश में बात करने की, तो हमारा स्पीकिंग इसी में ही ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो जाएंगी। अगर हम इस क्लास को पूरे ही ना स्पीकिंग में ही ले जाए ना इंग्लिश, तो फिर बेहतर हो जाएगा काफ़ी। इसकी आज नेट इशू था और उनकी आवाज भी कट गई थी शायद वो। हाँ, ऑफलाइन हो गई है। 2 मिनट ही रह गए हैं वैसे टाइमिंग के। चले वेट कर लेते हैं उनके आने तक का।
Okay, Allah Hafiz everyone. ओके, अल्लाह हाफिज।